गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कैफ़े नॉर्म्स। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो थर्ड फेज़ ऑफ कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने लगा है, ताकि फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके और कार्बन एमिशंस रिड्यूस हों। लेकिन इससे सिग्निफिकेंट डिसएग्रीमेंट जो है वो जनरेट हो रहा है विद इन दी ऑटो इंडस्ट्री। खासकर जो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्मॉल कार्स हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। तो ये कैफ़े नॉर्म्स हैं क्या? फ्यूल कंजम्पशन को रेगुलेट करने के लिए और CO2 एमिशंस को कम करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इंडिया एक वेट बेस्ड फार्मूला को फॉलो करता है, जो प्रोग्रेसिवली स्ट्रिक्ट होता जाता है। ठीक है, तो लाइटर कार्स जो हैं उनके ऊपर ये स्टीपर जो है एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स के नॉर्म्स लगते हैं रादर देन हैवी वंस। तो ग्रेटर रेगुलेटरी बर्डन आ जाता है स्मॉल कार्स पर, बजट कार्स पर। स्मॉल कार्स वैसे भी लो मार्जिन्स पर ऑपरेट करती हैं, तो वो ये कॉस्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। स्ट्रिक्ट नॉर्म्स की वजह से जो है कॉस्ट ऑफ एंट्री लेवल कार्स बढ़ जाएंगी। इसीलिए मारुति सुजुकी ने कहा है कि कैफ़े जो है वो एक्चुअली में तो बिग कार्स को फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए होना चाहिए, स्मॉल कार्स को पनिश करने के लिए नहीं होना चाहिए। यही अगर हम ग्लोबली देखें, US, चाइना, जापान, साउथ कोरिया में, वहाँ पर स्मॉलर कार्स के लिए रिलैक्स स्टैंडर्ड्स हैं। स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं ओवरऑल यूरोप में, लेकिन स्मॉल कार्स के लिए CO2 टारगेट्स कम हैं। इंडिया का सिस्टम ऑपोजिट है, एक तरह से रेगुलेटरी इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो आर्टिफिशियली वेट इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, ताकि एक रिलैक्स्ड एफिशिएंसी बैंड बना सकें वो, और उनको जो है वो उनके जो है नॉर्म्स उनको कम फॉलो करने पड़े। तो इससे जो है बिगर हैवियर कार्स बनेंगी, जिससे अफोर्डेबिलिटी भी जो है वो रिड्यूस होगी, और एमिशन जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ेगी ही बल्कि। तो चैलेंजेस अगर हम देखें, राइजिंग कॉस्ट जो है वो में उसकी वजह से जो है एंट्री लेवल कार्स अनअफोर्डेबल बनती जाएंगी। स्मॉल कार्स को इम्प्रूव करनी पड़ेगी, मोबिलिटी फॉर लोअर इनकम ग्रुप्स। ठीक है, ये फ्रेमवर्क जो है वो असल में कुछ CO2 एमिशंस ज़रूरी नहीं है कम करेगा। तो वे फॉरवर्ड क्या है? अपने आप को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से अलाइन करो, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ को encourage करो, प्रोवाइड करो एडिक्वेट ट्रांजिशन टाइम मैन्युफैक्चरर्स के लिए। जैसे इथेनॉल के लिए जो है टाइम नहीं दिया गया था, इस बार गलती वो नहीं करनी चाहिए। तो शिफ्ट करो एब्सोल्यूट एमिशन कैप्स की तरफ, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या टैक्स बेनिफिट दिए जाएं, ताकि बजट सेगमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइज गवर्नर्स पावर्स। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि गवर्नर्स जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर बिल्स को इंडेफिनेटली होल्ड नहीं कर सकते। कहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट विद इलेक्टेड गवर्नमेंट ज़रूरी है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। कोर्ट्स ने कहा कि वो कोई फिक्स टाइमलाइंस भी लेकिन जो है वो नहीं लगा सकते गवर्नर्स या प्रेसिडेंट पर असेंट ग्रांट करने के लिए। तो ये 5 जज बेंच की रूलिंग आई है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो दिया गया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा जी द्वारा, आर्टिकल 143 क्लॉज 1 में सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस उन्होंने मांगी थी। अप्रैल 8 की जो तमिलनाडु केस की जजमेंट थी उस पर ये ट्रिगर हुआ था, जिसमें एक 2 जज बेंच ने स्ट्रिक्ट टाइम लाइन्स दी थी गवर्नर्स और प्रेसिडेंट को बिल्स के ऊपर डिसाइड करने के लिए। तो प्रेसिडेंट ने 5 पेज रेफरेंस दिया था, 14 क्वेश्चन पूछे थे सुप्रीम कोर्ट से। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है आंसर दिया है कि गवर्नर जो है उनके पास पावर टू विद होल्ड असेंट इनडेफिनेटली नहीं है। गवर्नर जो है वो कैबिनेट के एडवाइस से भी बाउंड नहीं है जब वो असेंट, रिटर्न या रिजर्वेशन ऑफ बिल्स के बारे में डिसाइड कर रहे हैं। कोर्ट्स जो हैं वो रिव्यू नहीं कर सकते मेरिट्स ऑफ गवर्नर्स के डिसीजन, लेकिन फिर भी प्रोलॉन्ग्ड अनएक्सप्लेन्ड एक्शन जो है वो जस्टिशिएबल है। आर्टिकल 361 प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल गवर्नर को, लेकिन इंस्टीट्यूशनल ऑफिस को नहीं। इस इम्यूनिटी का यूज़ करके इनडेफिनेट डिलेज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कोर्ट्स जो है वो कोई टाइमलाइन या डेडलाइन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते गवर्नर्स को कि वो बिल्स पर एक्ट करें। प्रेसिडेंट के जो मेरिट बेस्ड डिसीजन है असेंट और विद होल्डिंग असेंट पर, वो जुडिशल रिव्यू के लिए ओपन नहीं होगा। कोर्ट्स कोई टाइमलाइन भी फिक्स नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू सिर्फ लॉज के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बिल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कोर्ट ने एक तरह से क्लैरिफाई कर दिया कि जुडिशियल पावर्स जो है वो रिप्लेस या रेप्लिकेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली असाइंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सरल सिम्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी सरल सिम्स स्टील इंपोर्टिंग
स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। तो ये सरल सिम्स है क्या, एक न्यू सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया है ताकि जो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर इंपोर्ट्स ऑफ स्मॉल कंसाइनमेंट्स है स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर, उसे सिंप्लीफाई किया जा सके। तो ये प्रोसीजरल बर्डन कम करेगा। ये स्टील और आयरन आइटम्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इंपोर्टर्स को एक सिंगल एनुअल डिक्लेरेशन देनी होगी अपने इंटेंडेड इंपोर्ट क्वांटिटी की, और वो एक सरल सिम्स नंबर फिर वो रिसीव करेंगे मल्टीपल कंसाइनमेंट्स के लिए थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग हुई है अभी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की न्यू दिल्ली में। तो ये CSC है क्या, रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशियस और सेशल्स आते हैं ताकि रीजनल सिक्योरिटी प्रमोट हो सके। तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और डिप्टी NSAs आते हैं मेंबर कंट्रीज़ के। इनिशियली 2011 में बनाया गया था ट्राइलैटरल फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन नाम से, लेकिन 2014 के बाद ये स्टैंड स्टिल पर आ गया। लेकिन 2020 में इसको फिर से रिवाइव किया गया, जब इसमें उसके बाद इसमें मॉरिशियस ने ज्वाइन किया, फिर बाद में बांग्लादेश ने ज्वाइन किया। रिसेंटली इसमें सेशल्स भी जो है 6th मेंबर बना है, और इसका जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो कोलंबो में है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेपाल ने डेट फॉर सर्वे लाइसेंस फॉर वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर दिया है, जो कि NHPC बना रहा है। तो वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है, 750 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज प्रोजेक्ट है सेती रिवर पर, जो कि कर्नाली रिवर की ट्रिब्यूटरी है नेपाल में। तो ये एक स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है लार्ज रिजर्वायर के साथ, और इसको इंडिया का NHPC बना रहा है। जब ये बन जाएगा 21.9% फ्री इलेक्ट्रिसिटी नेपाल रिसीव करेगा, बाकी की जो है वो एक्सपोर्ट कर दी जाएगी टू इंडिया। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेवलिन मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। US स्टेट डिपार्टमेंट ने जेवलिन मिसाइल और एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स का जो है रिलेटेड इक्विपमेंट को इंडिया को सेल करने का जो है अप्रूवल दे दिया है। तो जेवलिन मिसाइल क्या है, अमेरिकन मेड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। रीथियन और लॉकहीड मार्टिन ने इसे बनाया है, और ये बनाया गया है ताकि डिफीट हो सके हैवीली आर्मर्ड व्हीकल्स जैसे कि मेन बैटल टैंक्स या लाइटर स्किन्ड मिलिट्री व्हीकल्स। और ये सबसे पहले US मिलिट्री में 1996 में एंटर हुआ। इसकी इफेक्टिव रेंज 2.5 किलोमीटर्स है। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है ये, और ये टारगेट्स को एंगेज कर सकता है यूजिंग इधर डायरेक्ट और टॉप अटैक मोड। अब एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल क्या है, ये बेसिकली GPS गाइडेड आर्टिलरी शेल है जो कि लार्ज गन्स लाइक हॉबिट्सर से फायर की जाती है। इंडिया ऑलरेडी यूज़ करता है एक्सकैलिबर आर्टिलरी माउंट एमिनिशन अपनी हॉबिट्सर गन्स के लिए। ठीक है। और ये केपेबल होते हैं कि 2 मीटर्स के टारगेट पर रिगार्डलेस ऑफ रेंज ये स्ट्राइक कर सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेरठ बगल। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरठ बगल को GI टैग मिल गया है। मेरठ बगल आपने देखा होगा, ब्रास विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत कॉमन है, जो आर्म्ड फोर्सेस ड्रिल में बजाती हैं। तो ये एक तरह से स्टार्ट ऑफ मूवमेंट या इवेंट को सिग्नल करता है। क्लोजली लिंक्ड है टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री ट्रेडिशंस। और इसकी जो ये बगल जो बनाया जाता है इंटायरली मैनुअली बनाया जाता है। ब्रास शीट को कट करके हैमर किया जाता है एक स्पेशलाइज्ड डाई के साथ। ठीक है, उसको शेप में लाया जाता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is cafe norms. This topic is important for your environment section. So India is planning to implement the third phase of corporate average fuel efficiency norms so as to improve the fuel efficiency and reduce carbon emissions. But the weight-based structure of these new norms has triggered significant disagreement within the auto industry, especially between manufacturers of small cars and those with a portfolio of dominated by heavier SUVs. So what are cafe norms? So CAFE norms are basically aimed to regulate fuel consumption and CO2 emissions across a manufacturer's fleet. India is following a weight-based formula which becomes progressively stricter each year. Okay, so lighter cars face steeper efficiency improvements than heavier ones. So therefore, greater regulatory burden falls on small budget cars. So there is a concern among small cars manufacturers that small cars already operate on low margins and they cannot easily absorb the cost. Strict norms may raise cost for entry level cars. Therefore, Maruti Suzuki is arguing that CAFE was meant to push big cars to improve fuel efficiency and not to punish small cars. So, why some car makers are supporting CAFE norms? They are saying that they are basically rejecting weight based definition of small cars as arbitrary. Okay, so they say that they say these cars compromise safety standards.
So relaxed standards for small cars are there in already are already there in many countries like US, China, Japan, and South Korea. In fact, Europe has strict norms overall, but they have relaxed CO2 targets for small cars. India's system is doing the opposite, creating a regulatory imbalance. So manufacturers, what would happen now is manufacturers may artificially increase the weight to enter a more relaxed efficiency band. They may also start production of bigger, heavier cars, reduce the affordability and increase emissions in absolute terms. Okay, so what are the challenges here? Rising costs may make the entry level cars unaffordable. Small cars may improve small cars improve mobility for lower income groups, so this will have a socially regressive outcome. So frameworks may not truly reduce CO2 emissions, total CO2 emissions, only improve them on paper. So the way forward is to consider aligning ourselves with the global best practices, encourage all low carbon technologies, provide adequate transition time, unlike what we saw during the E20 debate. We must shift towards absolute emission caps instead of purely weight based formulas. Financial incentives or tax benefits must be given so as to protect the budget segment. So the next topic is Supreme Court clarifies governor's powers. This topic is important for your polity section. Supreme Court has ruled that governors cannot hold on to state legislature bills indefinitely, emphasizing that cooperative federalism requires constructive engagement with elected governments, not obstruction. However, the Constitution bench has also held that courts cannot impose fixed timelines on governors or the president for granting assent, nor can they create a doctrine of deemed assent. So, this judgment has been given by five judge bench led by Chief Justice of India, and they have given this opinion on a presidential reference, which President Draupadi Murmu ji invoked using Article 143 Clause 1 to seek the court's advice after the controversy arose over delays by governors and the president in acting on state bills. So this trigger was with the April 8 judgment on a Tamil Nadu case, where a two-judge bench had laid down strict timelines for governors and president to decide on bills. So in return, to resolve the ambiguity, the president submitted a five-page reference with 14 key questions. So the court has clarified the stance that a governor has no power to withhold assent indefinitely. Governor is not bound by the cabinet's advice when deciding on assent, return, or reservation of bills. Courts cannot review the merits of the governor's decision, but prolonged unexplained action is justiciable. Article 361 protects the individual governor, not the institutional office, so immunity cannot be used to justify indefinite delays. Courts also cannot prescribe deadlines for governors to act on bills. President's merit-based decision on assent or withholding assent to state bills is not open to judicial review. Courts cannot fix timelines or time limits for the president under Article 201, and judicial review applies only to laws, not bills. So, reaffirming all the answers, the court has clarified that judicial powers cannot replace or replicate constitutionally assigned executive functions. So the next topic is Saral Sims. This topic is important for your governance and economy section. So recently, Ministry of Steel has introduced a simplified registration facility called the Saral Sims under the Steel Import Monitoring System. And this new system is designed to simplify the process of registration for imports of small consignments under the Steel Import Monitoring System. The system is designed to ease the procedural burden associated with importing small quantities and export oriented shipments. So it will apply to steel and iron items. Importers need to make a single annual declaration of their intended import quantity and receive a Saral SIMS number for multiple consignments throughout the financial year. Okay. So the next topic is Colombo Security Conclave. This topic is important for your international relations. So seventh National Security Advisor level meeting of the Colombo Security Conclave was held in New Delhi recently. So CSC is a regional security grouping comprising of India, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Mauritius, and Seychelles. So its core objective is to promote regional security. Okay, it brings together national security advisors and deputy NSAs of the member countries. It was initially known as Trilateral for Maritime Security Cooperation. It started in 2011 with India, Maldives, and Sri Lanka as members, but it came to a standstill after 2014 due to rising tensions between India and Maldives. After its revival, in 2020, Mauritius joined it in 2022, then Bangladesh joined it in 2024, and more recently, Seychelles has become the sixth member of the CSC. So its headquarters or permanent secretariat is located in Colombo.
So the next topic is West Seti Hydropower Project. This topic is important for your International Relations and Economy section. So Nepal has extended the date of survey license for West Seti Hydropower Project, which is being developed by NHPC. So West Seti Hydropower Project is a 750 megawatt hydroelectric storage project on the Seti River, which is a tributary of the Karnali River in Nepal. So it is designed as a storage hydropower project with a large reservoir. This project is being developed by the uh, India's NHPC. So Nepal would receive, once completed, Nepal would receive 21.9% free electricity from this project, and the remainder would be exported to India. So the next topic is Javelin missile. This topic is important for your international for your security section. So US State Department has recently approved a possible sale of Javelin missiles and Excalibur projectiles and related equipment to India. So Javelin missile is an American made man portable anti-tank guided missile. It has been produced jointly by Raytheon and Lockheed Martin. It was designed to defeat heavily armored vehicles like main battle tanks and lighter skinned military vehicles. It first entered service with the US military in 1996. It has an effective range of about 2.5 kilometers, and with newer models, of course, it can reach up to 4 kilometers. It uses a fire and forget technology, and it can engage targets using either direct or top attack mode. What is Excalibur projectile? It's a GPS guided artillery shell fired from large guns like howitzers. India already uses them for its M777 howitzer guns, and they're capable of striking within 2 meters of the target regardless of range. So the next topic is Meerut Bugle. This topic is important for your art and culture section. So Meerut Bugle has received a GI tag. So the Meerut Bugle is a brass and wind instrument common with the drills of armed forces, and it is used in war ceremonies and parades for decades. So it is used to signal the start of the movements or events, and they carry a deep historical imprint. Their story is closely linked to the development of India's military traditions. The making of a bugle is entirely manual, and a brass sheet is cut and hammered into shape using a specialized die. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.